Hi, good afternoon. My name is Anupam Gambhir. I am from Estate Experts. We're standing inside Sushant Lok Phase 3. This is Sector 57. We're on a plot size of 500 square yards. This is the configuration of this house, which is a 4-bedroom hall kitchen. Let's get started. This place where I'm standing right now, this is to be considered the foyer area of this house. Since घर के बिल्कुल सामने वाले डिवीजन में आप देखेंगे, there's a small temple which you can actually make. ये मंदिर के लिए ही जगह दी हुई है. अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि शूज़ पहने हैं. This is a wooden console design. This has got cabinetries. ऊपर में आपका सीलिंग डिज़ाइन दिया नॉर्मल सा, और ये आपका इंजीनियर्ड वुड का एक लेयर शीट लगाया हुआ है टुवर्ड्स द एंट्रेंस. फ्लोरिंग पे पूरे इधर के पोर्शन में दिस इज़ योर हॉलोवे. बेसिकली दिस इज़ योर हॉलोवे एरिया. इधर से लेकर ऐसे इस तरफ ये सारे बेडरूम्स हैं. इधर में पूरा का पूरा टाइलिंग दिया हुआ है सरफेस पे. लेट्स गेट इनसाइड द फॉर्मल लिविंग स्पेस. दिस इज़ योर फॉर्मल लिविंग स्पेस ऑफ द हाउस. टाइलिंग ऑन द सरफेस. राइट साइड यू सी अ वॉल एयर कंडीशनिंग का प्रोविजनिंग है. Towards your left, you've got a huge wooden window which has a toughened glass endorsed in this. और यहाँ पर मैं खोलने वाली आपकी विंडो है नॉर्मल सी. इसको आप डे टाइम में खोल सकते हैं. सीलिंग की अगर मैं बात करूँ, इट्स a rectangular ceiling design this side, and this also has a glass given here. एक तरीके से पैनलमेंट दिया हुआ पूरा वुडन का. इसके अंदर भी ग्लास दिए हुए हैं साइड्स में. So once you get inside this place, this is your formal living space. This portion you can consider this as a dining section of the house. यहाँ पर आप dining कर सकते हैं. Table for I guess 8 people can easily be placed here. ये वाला wall आपका empty है, ये wall भी empty है. अपनी images वगैरह, अपनी memories आप इधर लगा सकते हैं. And this is the balcony which is connected with the dining space of the house. Once you have eaten your food, you can come out and you can stand here like this. Probably it will feel good because you're gonna breathe the pure oxygen. ये आपका stainless steel का railing है और toughened glass आपका मिको का दिया हुआ है. On the surface you've got the granite top. This also has a fixed glass. This is basically a fixed window. For the natural sunlight, crystal clear glass is placed to come inside. This way you may move outside. This is your balcony in the front, which you will share commonly with the living space and the first bedroom of the house. That's the provisioning given for your air conditioning system. You can place them. And this is your wet area. You also have a drainage vessel out there. यहाँ पर में आप अपने utilities का कोई सामान रख सकते हैं. एक छोटा सा स्पेस है, आप यूटिलाइज कर सकते हैं. एक बार आके भाई दिखा दीजिए. This is your MS का railing once again, and this is your toughened glass. On the surface you've got complete granite stonework. Ceiling you've got the grouping done on the roof wall. This was your formal living space and the formal dining space. Let's get inside the passage area. This will connect us towards the first bedroom of the house. This is your kitchen. So the first bedroom of the house is compact in size, has an attached balcony which you'll be sharing in common with the living space. Tiling work on the surface, left, right, back wall stays empty. For your customization, this is an air conditioning provisioning which is given to you. You can hang your air conditioning system. This is an attached washroom out here. If you come inside, you'll see on the surface you've got small 16 inch by 16 inch की anti-skid tiles. This is your ventilation duct. This is a fixed window. This is your exhaust fan. Rain head, wall mount rain head है आपका टाइलिंग वर्क दिया हुआ टेक्सचर टाइल्स है. दिस इज योर थर्मिक्स. दिस इज योर वार्डरोब सेक्शन.
complete wardrobe है. Little old fashioned but still okay. This is a granite top which has got some drawers down this to keep your stuff. A beautiful vanity by Glossera Italiano. This is your mirror and this is an LED light so that you can see yourself. A normal ceiling design has been given on the roof. This way is like rectangular. This is the powder room of the house. A beautiful vanity inside the powder room, which also has a granite stone. This also has a mirror and the cabinet storage space on the left. Towards in the front you see a white commode seat. This is a wall mounted seat. And you've got the geyser on the surface, you've got the tiling work, and the front is also the tiles on the wall. We have a beautiful mirror out here. This is the second bedroom of the house. Since this is the hallway area, आप चाहें तो यहाँ पर भी अपना कुछ मटेरियल रख सकते हैं अपने हिसाब से. जैसे कि आपका ये छोटा सा मंदिर एरिया हो गया, टेम्पल एरिया. यहाँ पर मैं आप कुछ वार्डरोब्स वगैरह बना के डिज़ाइन कर सकते हैं. मे बी अपने हिसाब से आप कुछ ना कुछ अपना इनोवेशन यूज़ कर सकते हैं. दैट्स योर क्लोजेट सेक्शन गिवन इन द फ्रंट. दिस इज़ द सेकंड बेडरूम ऑफ द हाउस. दिस इज़ द टाइलिंग वर्क. टीक वुड कलर शेड इज़ टीक वुड. लेफ्ट में एयर कंडीशनिंग का सिस्टम आपका लगेगा. ऊपर में फॉल सीलिंग देखेंगे, नॉर्मल है, स्क्वायर शेप में. Modular switches हैं. Towards your right hand side you've got the balcony space which is connected with this bedroom, which is a small balcony, but yes, it's pretty much good. यहाँ पर मैं आपका wet area दिया हुआ है which has a drainage vessel. This is a fixed window glass. This is how you open and you get outside to the balcony zone. Closet आपका दिया हुआ है front में. This is again द क्लोजेट सेक्शन. पूरा का पूरा ड्रेसर्स रूम क्लोजेट यहाँ पर दिया हुआ है आपको. बहुत अच्छा क्लोजेट स्पेस दिया हुआ है. Probably this is also closet, and once you get inside to this washroom space, this is a huge washroom that you get. A granite top on the vanity. A beautiful vanity out here by Glossera Italiano. This is like a beautiful mirror by Modi Guard. Sanitary fittings are by Jaguar. Rain head wall mount. On the surface, on the walls, you've got tiling, Thermix का geyser and Crompton का exhaust. This was about the second bedroom of the house. इस कमरे के अंदर आपको storage ज़्यादा दिया हुआ है, since this is the master bedroom of this house, I guess. ये वाला space आप accommodate कर सकते हैं किसी भी हिसाब से. इधर बहुत चीज़ें आपका हो जाएगा. इधर में आपका ceiling design देखेंगे. This is beautiful. This is damn nice. Above me you see two ceiling fans. This is the third bedroom of the house. काफ़ी spacious है क्योंकि बड़ी property है, 500 गज की. On the surface you will see designer tiles. Towards my left you will see a fixed window. This is again that you open it for the ventilation like this. This is your air conditioning का provisioning. Ceiling design is square in shape. This wall and the front wall in the right one stays empty. इधर bed ऐसे लगा के यहाँ पर मैं टेलीविज़न आप देख सकते हैं. This is your wardrobe section. This is your wardrobe section. Again you've got the tiling work done. This is your washroom. काफ़ी खुला खुला है, ज़्यादा congested नहीं है. ये सीलिंग डिज़ाइन नॉर्मल दिया हुआ है इसके अंदर. काउंटर टॉप पे नेचुरल स्टोन है ग्रेनाइट का. नीचे में आपके ड्रॉर्स हैं. सामने वैनिटी लुक्स टू बी ब्यूटीफुल. ऑल टेक्सचर टाइल्स. टाइलिंग वर्क बहुत अच्छा है इस वॉशरूम के अंदर. ये आपका एक मिरर दिया हुआ है. You've got the rain head wall mount fittings by Jaguar. Crompton का फैन है. इधर में आपका गीजर दिया हुआ है. This is your wall mount seat, and on the surface you've got the tiling work done. Let's get towards the balcony zone. This is the balcony of the house. This is the back side balcony. So if I say this is the back balcony, you probably have a running balcony like this. Back to back you've got a wall to wall plot. This is your air conditioning का provisioning. यहाँ पर में आपका drainage vessel है for your charging. You've got the sockets out here. A thick counter top granite stone. This is your running balcony, which is commonly shared with the fourth bedroom of the house.
This is your wet area wherein इधर थोड़ा सा टाइलिंग वर्क करा हुआ है, आपका ड्रेनेज वेसल है. दिस इज़ अ ह्यूज बैल्कनी आउट हियर दैट यू विल गेट. भाई यहाँ मैं होता तो झूला लगाता आराम से, इसको अच्छे से अपना कुछ बनाता, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नेचर से प्यार है. और आसपास की लोकेशन देखोगे पूरी लश ग्रीन है. और ऊपर का घर आपके सामने ही है सारा का सारा. ये ग्रेनाइट का टॉप दिया हुआ है सरफेस पे, इधर भी और साइड में भी, जहाँ पर आप हाथ रख के आराम से खड़े हो सकते हैं. काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर सराउंडिंग्स. एक बार आके भाई दिखा दीजिए प्लीज़. डेवलपमेंट्स हो रही हैं यहाँ पर. बड़ा सिंपल दिया हुआ है सीलिंग ऊपर. दिस वॉज योर थर्ड बेडरूम ऑफ द हाउस. लेट्स गेट इनसाइड द फोर्थ बेडरूम. बिफोर वी गेट इनसाइड द फोर्थ बेडरूम, दिस इज द provisioning for an air conditioning system. This is your fourth bedroom, a huge bedroom size which has tiling work on the surface, the right wall, left and the back side. A door that you see, it's actually the balcony area. Right wall में और left wall में आपका normal दिया हुआ है customization के लिए. यहाँ पर आपका air conditioning का provisioning है. Once again, this is all modular switches. This is your dressers area. This is your dressers area. This is the washroom. On the surface, you've got the tiling work. On the walls, again, you've got the tiling work. This is a Thermex geyser wall-mounted commode seat by Glossera Italiano. A Crompton fan, a beautiful mirror in front of you. This is your shower section. Sanitary fittings are all by Jaguar. You've got a rain head, and above me you see a small fan. This is the balcony connected to the fourth bedroom and the third bedroom that we've showcased to you. This is again a long running balcony which takes a right from the corner. This is all about this side. Let's cover up the kitchen. Ceiling design, again I've already told you, this is square. A beautiful hallway that I can see. I can move. You've got an open kitchen concept here, engineered wood. A beautiful kitchen space. Approximately 7 to 8 people can easily accommodate. घर में function है तो 7 से 8 बंदे easily accommodate हो सकते हैं. This is the space for your kitchen. Approximately 7 से 8 बंदे आसानी से accommodate हो सकते हैं. अगर आपके घर में कोई function, if somebody is visiting you, this is a good to go property. This is the place where you will install your hob and your chimney, and the wiring will go it like this. A huge thick granite top that you get. This is stain free. This is a wooden fixed window which you've got. The natural light is flowing inside your house, and you also can keep an eye on the door as well. This is your geyser by Thermex. This is your washer's vessel. Again, you wash your utensils and you keep it up like this. That's how you place it. आपका टेक्सचर टाइल्स दी हुई है, नॉर्मल सरफेस पे आपका टाइलिंग वर्क है. दिस इज़ अगेन टू कीप योर स्टफ. आप चाहें तो देखिए गैस का जो बर्नर होता है ना, हॉब इधर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर में भी आपका सफिशेंट स्टोरेज दिया हुआ है. ये सारे कैबिनेट्स दिए हुए हैं आपको, और सीलिंग डिज़ाइन सिंपल है इसका. दिस वॉज अबाउट द किचन दैट वी हैव कवर्ड. So the last but not the least, this is the biometric surveillance system. Again, you see the person who's coming down. इधर अभी गाड़ी खड़ी हुई है. You can see a Harley Davidson parked here. You see this is some kind of a machine which is also parked. So कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इधर से आप ऑथराइज करोगे तभी सामने वाला ऊपर आएगा. So finally, to sign off, this was Anupam Gambhir from Stair Experts. Thank you so very much for watching us. Stay tuned for more and more videos. Don't forget to give us your thumbs up, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.